Hello dear students, I hope you are all well. So আজকের এই ভিডিওটা বানাচ্ছি আমি বেসিক্যালি আমার কয়েকটা স্টুডেন্টের কথা মাথায় রেখে তাদের স্পেশালি ছিল স্যার লোকেশন এক্সটেন্ড অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিচারের উপরে এক্সারসাইজের একটা সলিউশন করে দিন। তো আজকে এই ভিডিওতে আমরা সেটাই কভার করবো। তো লেটস গো, টেক योर सीट एंड हियर वी स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्ट कोस्टल प्लेन का फीचर है दे आर प्रोडक्ट ऑफ इमर्जेंस ड्यू टू डिपॉजिट्स एंड सेकेंड फीचर्स क्या है? दे हैव लाइनियर कोस्ट लाइन्स। सो इसका लीनियर कोस्ट लाइन है and they are product of the emergence due to the deposits. Western coastal plain का क्या है? They are a product of submergence of land, and second one they are endowed with many natural ports. So second question क्या है? वन फर्स्ट का बी नंबर का जो सब क्वेश्चन है उसके अंदर वो क्या है? What kind of mountain are the Himalayas? By what name are the offshoots of the Eastern Himalayas known? Himalayas are active fold mountain. The offshoots of the Eastern Himalayas are known as Darjeeling Himalaya, Sikkim Himalaya, Bhutan Himalaya and Arunachal Himalaya. Next number C में क्या है? State how the northern plain were formed. The northern plain were formed by the deposit brought in by the three major rivers Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries. Alluvium was deposited at the foothills of the Himalayas for millions of years. These deposits are now the fertile northern plain. The next one, number D में क्वेश्चन क्या है? Give a geographical reasons for each of the followings. So first followings क्या है? The river of South India are less suitable for the irrigation than the river of North India. But क्यों? इसका कारण क्या है? The river of South India are less suitable for irrigation than the river of the North India because river of North India are perennial as they are snow feet, but the river of the South India are seasonal as they are rain feet. That's mean कि perennial feet क्या है, इसका snow feet क्या है? ये इसका मतलब ऐसा है कि जो नॉर्थ इंडिया का जितना सारा रिवर है आपका पकड़ के चलिए, उसमें जो हिमालय का और दूसरा माउंटेन का जितना भी बर्फ है उसको गल के पिघल के उसका पानी आता है, इसलिए हर सीजन में उसमें पानी रहता है। बट जो साउथ इंडिया का रिवर है वो बेसिकली रेन फीड है, सिर्फ मानसून में रेनी सीजन में उसमें पानी रहेगा और दूसरे सीजन में नहीं रहेगा। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ए गोंडवाना लैंड hundreds of million of years ago. So Gondwana hundreds of million of years ago. So क्या है? The Peninsular Plateau of India is consists to be a part of Gondwana land hundreds of millions years ago because due to the tectonic movements, the Indo-Australian plate drifted after being separated from the Gondwana land toward the north. Moreover, the rock that make up the plateau match those in Africa in age, type and the layer sequence in which they occur. And number 3 में क्या है? The Narmada and Tapi do not form deltas. The Narmada and Tapi do not form deltas because they flow through hard rocks and are not able to form distributes before they enter the Arabian Sea. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमारा वन के अंदर जितना भी क्वेश्चन था ABCD हमने फिनिश कर लिया। अभी क्या है, तुम्हारा स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तुम वीडियो को पॉज करके उससे तुम्हारा आंसर निकल सकते हैं।
अभी नंबर 2 में देखते हैं हम क्या है, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन। तो हमें बेसिक डिफरेंस ढूंढना है कोस्टल प्लेन और नॉर्थ इंडिया के बीच में। तो देखते हैं प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का फीचर क्या है। दिस प्लेन आर लोकेटेड इन द मेनलैंड ऑफ द इंडिया टूवर्ड द साउथ ऑफ हिमालयंस। कोस्टल प्लेन में क्या आएगा, दिस प्लेन आर लोकेटेड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथर्न इंडिया। तो इधर साउथ ऑफ हिमालय, साउथ ऑफ इंडिया है। और क्या है, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल, फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द कोस्टल रीजन। ये तो बेसिक ही है, सी के साइड में रहेगा तो उधर पे पानी का उधर मछली उसका मेन प्रोफेशन होगा, मछली पकड़ना, फिशिंग करना। और हमारा नॉर्थ इंडिया में क्या है, इधर पे ज़्यादातर फार्मर लोग होता है, तो इसलिए फार्मिंग इसका मेन ऑक्यूपेशन है। अभी नंबर सेकेंड डी में क्या है, नेम टू रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू दैट फ्लो टूवर्ड द अरेबियन सी। नेम टू रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो मुझे पता है इसका आंसर आपको आता है, देख लेते हैं क्या है। टू रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू दैट फ्लो टूवर्ड द अरेबियन सी आर नर्मदा एंड तापी। टू रिवर्स दैट फ्लो इन द बे ऑफ बंगाल एंड महानदी एंड गोदावरी। ये नर्मदा तापी को लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस आता है, तो ये दो रिवर दिमाग में ध्यान से रख देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस 2022 एंड 2023 सेमेस्टर के लिए। इसमें जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी फिलहाल जस्ट 10 में आए हो और नेक्स्ट ईयर तुम्हारा एग्ज़ाम जिसका है इसके लिए। तो नेम ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटू का 4 पार्ट क्या है, द सेंट्रल पेनिनसुलर, ईस्टर्न पेनिनसुलर, द कटिवार एंड कच्छ पेनिनसुलर एंड द डेक्कन प्लेटूज। तो इसमें पेनिनसुलर इंडिया का क्या है, सॉरी, द सेंट्रल प्लेटू, द सेंट्रल प्लेटूज, द ईस्टर्न प्लेटू, द कटिवार एंड कच्छ एंड द डेक्कन प्लेटू। ये सारा पार्ट हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटू का। अभी दूसरा क्या है, नेम ऑफ द लैंड फॉर्म दैट फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। सो द लैंड फॉर्म्स दैट form the boundaries of the Peninsular Plateau are Aravalli Range in northwest, Bundelkhand Plateau in extreme north, Western Ghat in west and Eastern Ghat in the east। तो ये क्या होगा, इसका बाउंड्री हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट, गिव ए जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें क्या है इसका रीजन ढूंढना है, लिखना है, जिसमें क्या है, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑन द वेस्ट कोस्ट देन ऑन द ईस्ट कोस्ट। ऐसा क्यों है, ईस्ट वेस्ट कोस्ट में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा अवेलेबल क्यों नहीं है, ठीक है। तो लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑन वेस्ट कोस्ट देन द ईस्ट कोस्ट बिकॉज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर wider than the western coastal plain. Moreover, then deltas formed by the river like Kaveri, Krishna, Godavari, very fertile and useful agriculture. Okay. अभी नेक्स्ट वन क्या है, दो एक्सेस थ्रू द वेस्टर्न घाट इज डिफिकल्ट। क्यों वेस्टर्न घाट डिफिकल्ट है एक्सेस के लिए, जाने के लिए। एक्सेस थ्रू द वेस्टर्न घाट इज डिफिकल्ट बिकॉज दे हैव ए हाई एलिवेशन of about 900 to 1600 meter. They are continuous and can be crossed through passes only. नंबर 3 में क्या लिखा था, 3 में था द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, जिसका एग्जांपल इधर पे द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ एक्सप्लेनेशन में है, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एज इट इज कवर्ड विथ bastic lava and lava sheets which are rich in mineral. अब नंबर 3 में क्या है, give two differences between the eastern Ghat and western Ghat. They rise gently from the east coast. The hill are discontinuous. Eastern Ghat में, western Ghat में क्या है, the rise steeply from the west coast and the hill are continuous. ओके अभी नंबर 3B में क्या है, नेम द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा वेयर डज दिस
river enter the plain. Gangetic glacier in the Himalayas is the source of a river Ganga. The river entered the plain at Haridwar, Uttarakhand. That's all. अब इसी का क्या है, सी के अंदर दो क्वेश्चन से देखते हैं. नेम एनी टू लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. Okay, the two left bank tributaries of Ganga are Gomati and Khagra. Okay, and next one क्या है? In Ganga, peninsular river give reason. So yes, Ganga is a Ganga is a perennial river give reason. Yeah, yes, Ganga is a perennial river as it has water flowing through the year. It is fed by a rain in the rainy season, melting of the ice in summer season, and snow in water season, and snow in winter season. So इसलिए ये एक पेरिनियल रिवर है. तो हमको पता ही है पेरिनियल रिवर उन सब रिवर को बोला जाता है जिसमें सारा साल भर पानी रहता है. ठीक है. गिव ए जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, क्या है? द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. The northern plain of India are one of the most densely populated region of the world as they are endowed with fertile soil, numerous river and favorable climate. Okay, and the second one क्या है? The Deccan Plateau is an example districted plateau. So the Deccan Plateau is an example of a districted plateau because several seasonal rivers flow across the Deccan Plateau. And number 3 में क्या था? The river of South India are easier to tap for power than the river of North India. Yes, the river of South India are easier to tap for power than the river of North India as the rivers are made by waterfalls and have less silt as they or igneous rock. Okay students, and that go to next one. तो नंबर 4 में क्या बोला गया है? गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द रिवर ऑफ साउथ पेनिनसुलर इंडिया. अभी क्या है? रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया में क्या है? दे आर पेरेनियल एज दे आर स्नोफी. दिस रिवर आर लॉन्गर. एंड रिवर ऑफ साउथ इंडिया में क्या है? दे आर सीजनल एज दे आर रेन फीड. दिस रिवर आर कॉम्पेरेटिवली शॉर्टर. ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट वन में क्या है? 4B में नेम द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर्स ऑफ राजस्थान प्लेन. ओके, नेम द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. तो इधर पे दो पार्ट है, तो हम देखेंगे. द ओनली सिग्निफिकेंट रिवर ऑफ द राजस्थान प्लेन इज लूनी और द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज माजुली, जो कि है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर. ओके, how is cultivation carried out in the Rajasthan plain? Cultivation is done in small patch in this area with the water provided by small stream which originated from the Aravalli during rainy seasons. राजस्थान के लिए है. And next one is name the fertile tracts of this plain. The fertile tracts of this plain are known as Rohi. Okay, give a geographical reasons for each of the following. Okay, तो first क्या है? Most of the rivers in South India flow into the Bay of Bengal. Most of rivers of South India flow in Bay of Bengal because the Peninsular Plateau gently slopes from west to east, and hence the river flow from higher altitude to lower altitude and fell into the Bay of Bengal. And the next one क्या है? The run of Kutch is not cultivated. Yes, the run of Kutch is not cultivated because it is mostly lowland covered with the salty water. Okay, and the next one, the Rajasthan plain are an area of inland drainage. Okay, the Rajasthan plain are an area of inland drainage because the river of the area do not have sufficient water to reach the sea and dry up or disappear into the sand. Okay, okay student. Also अभी क्या है इसमें?
तो हमारे इधर पे इतना ही था 4 का डी तक। मे बी बांग्ला हिंदी আমি শিখছি। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी कंफ्यूजन है, डाउट है, मुझे प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। किसी को मैप चाहिए, हम मैप दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, खाना टाइम टू टाइम खा लीजिए, गेम खेलिए, फन कीजिए, मस्ती कीजिए और खुद का ख्याल रखिए। ओके, सो मैं अभी चलता हूँ। अभी मेरा इधर पे क्या है, 23:53 और 10 मिनट 11:53 हो गया। थोड़ा देर बाद 12 बज जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं रात को। अगर मेरा वीडियो में कोई भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन में, प्लीज़ स्टूडेंट्स मुझे बताइए, कैसे करने से वीडियो करने से अच्छा होगा। मैं ट्राई करूँगा उसको फॉलो करने के लिए। और जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून, हैव ए गुड नाइट। यस, मे बी मेरे इधर पर अभी रात ही हो रहा है। चलो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।